super good. After this is done, you will go to numbers. Specifically जो जो चीजें बोल रहा हूं सिर्फ उतना ही करना. Those who are not good in numbers or not good in quant, or you think so, all of you can be good in quant. Numbers, basic prime number आना चाहिए सबको. सारे प्राइम नंबर के कंसेप्ट जो क्लास में हुआ था, सारे कंसेप्ट होना चाहिए प्राइम नंबर के. फैक्टर्स, सारे बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए. फैक्टोरियल, सारे बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए. HCF LCM, सारे बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए. बेसिक रिमाइंडर क्वेश्चन लास्ट ईयर ही दिया था. रिमाइंडर के क्वेश्चन, बेसिक रिमाइंडर के क्वेश्चन लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चन दिया था पेपर में. खोल के देखना PYQ जो कर रहे हो. लेट्स से 3/40 डिवाइडेड बाय 80. व्हाट इज द रिमाइंडर? 3/4 10 करना है डिवाइडेड बाय 80. ये सेम क्वेश्चन नहीं है, कुछ अलग होगा. ये 81 होता है. 81/10 बाय 80. 81 divided by 80 remainder is 1. 110 times. तो रिमाइंडर होते हैं 1. ऐसे क्वेश्चन दिए थे लास्ट ईयर. तो तुम्हें आई है ना आए, ये बेसिक चीजें कर लेना. प्राइम नंबर, फैक्टर्स, फैक्टोरियल, HCF LCM, बेसिक थिंग्स यू शुड बी. एंड रिमाइंडर क्यों? ये एनिमेट स्नैप में भी आएगा. और this helps in quant section. Even if you can't get any numbers question correct, this is a tool for cat. This is a tool for cat. तो बेसिक चीज आना चाहिए. प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3, 5, 7, these are prime number. All of we can run it. After these things are over, if you still have lot of time, go for anything. I don't care. And those are already getting 14, 15, 16, 20 correct. You don't have to listen to me, whatever I have told. Now come, this is the second step. This is the most crucial step. Next 20, 25 days, you'll have to do it. But there is one more important step, which you are not following, most of you. Class mein when I discuss with students, I find it out, none of you follow this. Now come to the most crucial step. You don't know how to write a test. This is your MCAT paper, right? MCAT 2 तो हुआ नहीं है. MCAT 3 हो गया, right? This is the quant section. I'm opening. देख क्या कर रहा हूं मैं. सुन पहले, उसके बाद जैसे मैं लिखूंगा ऐसे तुम लोग लिखोगे. This is the third step. I'll explain also. But first, check the live paper. Divide the quant section in two parts. All of you are getting it. Listen minutely, all of you. I'll not repeat this. Divide the quant section in two parts. Here, 20 minutes each. 20 minutes each. 20 minutes, 11 question. I am assuming 22 question will be there. 24 दिया तो आधा आधा कर लेना. एक बार स्क्रॉल कर लेना तो पता चल जाएगा ना कितना क्वेश्चन है. 20 minutes, 11 question. Every MCAT you write, every SAMCAT you write, you do exactly the same process. ठीक है? Every day. जब भी टेस्ट लिखोगे, 2 MCAT बचा है, previous 2 MCAT लिखोगे, like that. 20 minutes, 11 question. ठीक है? After that, what you do? Look at it. What I'm doing? I'm starting the test. ठीक है? देख, 22 questions are there. ठीक है?
The ratio of absolute difference between the roots of 6x square minus x minus 40 equal to 0 and the absolute difference between the roots of 2x square plus 9x minus 5 equal 0. Quadratic equation question. Let's say I don't know. You'll put a cross. यहाँ पे cross मारोगे cross. ठीक है? हो गया? Question 2. You read it. आया? टिक करोगे. नहीं तो क्रॉस मारोगे. सॉल्व मत करना. टिक और क्रॉस तुम्हारे मन में 1 2 3 4 लिख लेने का. Look at it carefully. How I'm doing it. Or I need more number of crosses. Take exactly what you do. What I told, 20-minute 11 question. तो फटाफट लिखना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, फटाफट लिखने का. 1 नहीं आता है. आई एम जस्ट पुटिंग क्रॉस. 2 नहीं आता है. ठीक है, आई डोंट नो अबाउट 3. चलो देखते हैं 3. 3. अरे लॉगरिथम ये तो कभी नहीं आएगा मुझे. 4 डिजिट नेचुरल नंबर, नो चांस इन द वर्ल्ड. नंबर के क्वेश्चन है. इतना पढ़ने से समझ में आ जाएगा ना, नंबर्स के क्वेश्चन है. 5 रेगुलर हेक्सागन, जियोमेट्री सर ने मना किया था, नहीं होएगा. मैक्सिमम वैल्यू कभी सुना ही नहीं. टाइम एंड वर्क आता है मुझे, पढ़ने का अच्छे से, टिक करने का. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था. ठीक है, जो भी क्वेश्चन है यू विल डू दिस फटाफट. 3-4 मिनट लगेंगे ये करने. 7 में टिक किया. ठीक है, ये 7 ही था ना. 7 में टिक किया. 8 एवरेज मिक्सचर एलिगेशन आता है मुझे, टिक करने का. 9 हार्मोनिक मीन. एपीजीपी किए हो तो हार्मोनिक मीन का इतना तो पता ही होगा. इफ नंबर्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ देन दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इतना ही है, एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है. सर्कल कभी सुना ही नहीं. एपीजीपी के क्वेश्चंस है, कितने कॉमन टर्म होंगे. फिर भी वेन डायग्राम चलो ये भी नहीं आते. परसेंटेज के क्वेश्चन है. 12 पहुंच गया मैं. एनीवे 11 तक, 11 तक कितने क्वेश्चन मिले थे? 3 क्वेश्चन मिले थे. ठीक है ना. लेट्स टेक नंबर 3 फॉर जस्ट फॉर द आर्गुमेंट. तो मुझे कितने क्वेश्चन मिले थे 11 तक? 3 क्वेश्चन मिले थे. Three questions I got. I'm not taking 3 also. I'm taking 2 क्वेश्चन मिले थे. दो मिले थे. ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना टाइम चाहिए पता है? 2 into 2 4 मिनट. और अगर पकड़ता हूं मैं 2 क्वेश्चन, ये ढूंढने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए और 4 मिनट. ये 4 + 4 कितना मिनट हुआ पेपर में? 8 मिनट. तुम्हारा 2 क्वेश्चन राइट हुआ. 2 क्वेश्चन. ठीक है, 8 मिनट में. You have not tried anything which you don't know. क्रॉस 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 2 क्वेश्चन मिले. ठीक है, तुम बोलोगे सर 2 क्वेश्चन से आ जाएगा, नहीं जाओगे. चलो आगे चलते हैं पेपर में. 8 मिनट में खत्म. है मैंने बोला था 20 मिनट 11 क्वेश्चन, तो तुम्हें तो 2 ही क्वेश्चन आया ना, तो 8 मिनट में हो गया. दिस पार्ट इज ओवर. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन नंबर 12 आएंगे ना. एक हुआ. परमुटेशन कॉम्बिनेशन सर ने मना किया. डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कभी सुना ही नहीं, नहीं होएगा.   इंडाइसेस साइड्स, 2 क्वेश्चन. 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 2 क्वेश्च
होना चाहिए ये 2 और 3 कोप्राइम नंबर है, तो सिर्फ ये नंबर को फैक्टराइज करोगे ना, तो तुम्हें x प्लस 3y का एक इक्वेशन मिल जाएंगे और x प्लस y का एक इक्वेशन मिल जाएंगे। दिस इज सिंपल इक्वेशन क्वेश्चन। 2 और 3 के पावर एक्सचेंज नहीं हो सकता है क्योंकि दे आर कोप्राइम। दो नंबर चैप्टर से सीखना है और इंडाइसेस क्वेश्चन है, तो x और y का दो इक्वेशन सॉल्व करना है। चलो इसको भी नहीं लेते, ठीक है, एक ही क्वेश्चन मिला। फंक्शन तो सर ने ना बोला था, तो होएगा नहीं मेरे से। ना नो, ये तो आना चाहिए ना। एक दो बार है, 1 स्क्वायर, 2 4 बार है, 4 इंटू 2, 3 6 टाइम्स है, 6 इंटू 3, ये सीरीज तो आना चाहिए ना। दो हुआ। कौन सा चैप्टर है? टाइम एंड डिस्टेंस। 3 हुआ। जियोमेट्री नहीं आते, सर ने मना किया। प्रोबेबिलिटी नहीं आते। रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन 4 हुआ। परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आते। क्वाड्रेटिक, हाउ मेनी ऑर्डर ट्रिपलेट्स, ये तो नहीं होगा। कितने मिले? 4। 4 क्वेश्चन मिले, हाँ, 12 से 22 तक। 4 भी नहीं, मैं तो 3 ले रहा, 3, चलो 3 क्वेश्चन मिले। 3 क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 3 to 2 6 मिनट। डोंट इन्वेंट एनीथिंग इन द पेपर। 3 क्वेश्चन तुम्हें आता है तो 6 मिनट में होना चाहिए। ढूंढने के लिए कितना टाइम चाहिए? 4 मिनट। वहां पे 4 मिनट दिया था, तो यहाँ पे भी 4 मिनट। 6 प्लस 4 कितने हुए? 10 मिनट। तुम्हारे पेपर में 8 मिनट और 10 मिनट गया। तुम्हें कितने क्वेश्चन मिले? यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तुमने कितने क्वेश्चन राइट किए? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन किया था, यहाँ पे लिखा था मैंने, यहाँ पे लिखा था मैंने 5 क्वेश्चन। देखो क्या होता है 5 क्वेश्चन में। 70 परसेंटाइल होएगा। It is impossible to get a below 70 percentile with 5 questions right. It is impossible. You can't get it. कोई भी कैट पेपर में पॉसिबल नहीं है। You got 5 correct and you got below 70 percentile. Easiest paper in the world, still you will get more than 70 percentile. It may go to 85 also. Now look at it. You don't have any time problem. 8 plus 10 minute, 18 minute you should get 5 questions. तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? These 5 questions you are not getting, or you are getting at the end after trying 20 questions. All of you are trying 20 questions. You are writing MCAT or you are not writing, you are trying 20 questions, then you are getting into this 5. Trying 20 questions or trying 15 questions will take all your 40 minutes. All your 40 minutes will be gone and you will end up with 4 5, and you may be doing one wrong. I am telling you to try 5 questions, do 5 questions correct, which will save your time. Now I will tell sir what I will do with excess time. That is the important part. Of course, that is the important part which I have already discussed. I'll have to go to this 8 plus right. 8 plus right. In a difficult paper, this 8 will give you 95, 96 percentile. Why not? And in a easy paper, this 8 question will, this will give you a college. This will give a college.
and this part is going to give you a IAM. And all of you can get into an IAM. I repeat, there are 22 IAMs. Sometimes you forget. I get 22 IAMs. 10,000 seats with all programs. 10,000 seats. Why you can't get it? Why you can't get it? I don't know. It's impossible for you not to get it. So the point is, if you can do this, and you can do this mentally, most of you don't believe this. That is the problem. Do it in every MCAT you are writing. 20-minute 11 question. And if you are getting 4-5 questions here, okay, first part mein, if you are getting 5 questions, possible. Out of 11 only you are getting this 5 questions. Then you will exhaust your 20-minute, and then you will go for your next 20-minute 11 question. You may again get 2-3 questions, or maybe 5 questions again. So this is the way. And what I told, you have to cancel it out. That is very, very important. Same for 12 to 22 also. 12 cancel, 13 cancel, 14 cancel, cancel. And you take one MCAT paper and do this cancellation. You end up with 1 question or 2 question or 3 question, whatever your base value today. You will feel relieved. अरे ये एक तो क्वेश्चन मैं करके आएगा पेपर में. I'll take 2 minutes. I'll take 5 minutes. Don't worry about you can't do 22 questions. For that, you still have time to improve. And exactly the way I have asked you to do it. But take one MCAT, do 1 question correct, which will take 2 minutes. You can't take more than 2-3 minutes for a question. अगर तुम्हें आता है तो. Now, these chapters are the most important one. Simple equation, ratio proportion variation, percentage profit and loss, SICI, average mixture, time and work, time and distance. Then special equation, APGP, quadratic, inequality, indices, sets. अच्छे से करो. Then go for numbers. Those are already getting 10, 12 correct. What your job is? Your job is to do logarithm. Those are already getting 10, 12. Already getting 10 plus right. Go for logarithm. ठीक है. Predictable question एक होएगा पेपर में राइट करने का. Those who are not getting more than 2-3 correct, don't touch it. Logarithm. Do 1 question. हाँ. Do function वाला question carefully. Function और series के common questions होते हैं. एक दो आएंगे तो एक करना है. ठीक है. This is predictable limit. Then be careful about doing geometry. Geometry में क्या करोगे? And it is for all of you, क्योंकि बाकी चाहिए. Those are weak. Just do this part. Mensuration. Mensuration first. Geometry is 5 chapters. Geometry, mensuration, coordinate, trigonometry, and graph. This mensuration part is predictable. And ये जो trigonometry है ना, यहाँ पे जो height and distance question बोलता है, height and distance, these 2 part कर लेना अच्छे से. एक क्वेश्चन मिल गया तो करके आना. What is the problem nowadays happening in geometry? If you look at the actual CAT paper of last couple of years, they are not giving the diagram.
not giving the diagram. समझे? When they are not giving the diagram, not giving the diagram, when they are not giving the diagram, you are drawing the diagram. First draw कर रहे हो. Then you are deciding decision, which is itself is taking 2 minutes. That मेरे से ये नहीं होगा या तो मेरे से ये होगा. So just take the geometry question. Those who are still getting 10, 12, 13, 14 plus, geometry question को last में ले लो. Just take last में. When you exhaust with this arithmetic part and algebra part, then you will have geometry का time, right? That is what the process is for. Process क्या बोला था मैंने? I think all of you got it. 20 minute 11 question. ठीक है? Is that clear for everyone? It works for everyone. How you use it? क्रॉस क्रॉस क्रॉस. तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिले थे, यहाँ पे 3, 5. उसके बाद जो बचा रहेगा, फॉर दैट यू हैव 20 मिनट टाइम. यहाँ पे 8 to 8 plus 10 10 18 मिनट होते हैं, तो यू हैव रिमेनिंग 22 मिनट. आई एम टेकिंग 20 मिनट. Remaining 20 minutes. When you are exhausted with everything, which you know in the first go, then you do whatever you want, right? Those are already getting 10, 12, 13, 14 question. 1 mark matters. And for that also, the first step is important. You have to go to the paper analysis for each and every year to figure out which chapter you are not good at. It has to be a chapter to chapter. You cannot be good or bad in quant. You can be good or bad in one particular chapter. Simple equation, ratio, proportion, geometry, or whatever. Okay? So this is the very basic way to look at any paper and the strategy to write the paper. Now what will you do? How do you practice this part, this cancellation part? You have दो MCAT. All of you should write the MCAT. Please do write your MCAT. MCAT 2 and MCAT 1 is remaining, I guess. ये तो डेट में ही लिखना है. Write maximum 2 more MCAT. Max 2 more. Don't write every day MCAT. It doesn't happen. If you're already getting 99 percentile, it may still work, but otherwise not. Max 2 more. Whatever missed MCAT, right? You have a lot of missed MCAT, everyone. Missed MCATs. Take 2 more and write them, whichever that number is. Those who want to write couple of SAMCAT, write 1 or 2 SAMCAT, maybe 2 SAMCAT. So maximum 6 paper, may not be 6 also, 5 will do. 2 SAMCATs. So you have 2 MCAT left, 2 missed MCAT, 2 SAMCAT. You may take MCAT also. So 6 paper you write and you make a schedule of it. I'm just giving an arbitrary number. Maybe you are writing today is first. So let's say you are writing something on 3rd November, 4th, 5th. Let's say you are writing on 6th November. I'm just taking an arbitrary number. 6th, 7th, 8th, 9th November. 10th, 11th, you are writing on 12th. 2 दिन का gap ले रहा हो. 12th November. 13, 14, you are writing on 15th November. 16, 17, छोड़ के you are writing on 18th. Something like that. Don't write here only 2 don't. This 18 can be 19 or 20 or whatever. Do not write any MCAT. Do not write any MCAT. After 25th of November. Do not write. Do not write. This is the first. Second, after the CAT admit card is out, write MCAT
on your slot. Write MCATs in your slot time. Morning, evening, practice it in your slot time. Those who want to write couple of more paper, I suppose you take 1 or 2 speed paper. 1 or 2 speed paper. What is those speed paper? Speed paper is NMAT or SNAP. Confidence में बोलेंगे or it will help also. Speed paper. Let's take 2 paper, 1 NMAT, 1 SNAP, or 2 SNAP, 1 NMAT. Maximum 3. So maximum 3, 2 to 3. Take speed paper and write them. कब लिखोगे? ये बीच बीच में डाल देना. थर्ड के बाद फिफ्थ में लिख लेना. Something like that. Snap is easier because it is 1 hour test. Take the least time. And उसमें arithmetic भी ज्यादा questions होंगे तो थोड़ा रिविजन हो जाएगा. 2-3 पेपर. तो overall, those who are writing only cat, you should focus on only this cat part. Okay. Those who are not writing NMAT snap, only MCAT you focus. 6 से ज्यादा मत लिखो. Don't write every day MCAT. It doesn't improve anything. ठीक है. And those who are writing other exams, I get most of you are writing it. Please make sure that you are taking 1 or 2 NMAT snap paper also in between so that you can familiar yourself with the easy paper. Okay. So this is basic idea which I wanted to discuss with everyone. All of you now can start asking question. Just give me a minute or so. And then if you want me to discuss, I will discuss DILR also. Just give me a minute. Now you can ask your question. Those who want to unmute, unmute and ask your question. Those who want to write, you write. Those who don't have any question, go and study. Hello. Yes. Hello. Oh, can you Yes, hear me? Rachel. Yeah, sir. I've been trying to give advanced tests in all 3 sections as practice, like 40-minute practices. Should I continue doing that or no? English continue. DILR continue. Quant depends on how you stand. Quant, you have to do the book. After that, that advanced test. I don't mind whatever material you are doing. The only thing is that there is no guarantee that CAT is going to have only difficult question. Okay, this is the first. Second, your job in a difficult paper also to do all the easy questions. Actually, our job doesn't change. If it is a difficult paper, our job is to do easy questions. If it is a very easy paper, I'll do as many easy questions as possible. Are you getting on now?
So only writing difficult test will not solve your problem of quant if your concept is not clear in one particular chapter. Yes, sir. It's actually breaking down my confidence because I'm not getting like. Your job is simple. If it is a very difficult paper, as I told you, cancel it out, right? And forget all difficult questions. Do only the easy ones. Find the easiest one. All of you, again, I'm showing this. All of you figure out easiest question for yourself. Let's come to question number 1. Easiest question. अच्छे से देख, सब लोग देख, यही करना है तुम्हें. You figure out yourself. ठीक है? Question number 1. सब लोग दिख रहा है ना? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. You figure out it is tick or cross. Put it fast. First put a cross or first put a tick. Question number 1. I'm showing one by one. देख कितना टाइम लगता है. Put a cross or tick. And put a cross in first go. In the first go. मेरे से नहीं होगा. एक बार पढ़ने के बाद. थोड़ा सा भी difficult है cross. All of you are doing it, right? Question number 2. पेन और पेपर से करो सब लोग. Question number 3. Question number 4. Question number 5. You decide fast and decide fast cross. जो क्रॉस नहीं होगा वो ठीक है. Question number 6. I'm doing it for entire paper. खत्म हो जाएगा, 12 मिनट है. 7. All of you reading and putting a cross or tick, right? 7. 8. 9. यही वाला एम कट लिखा तुम लोगों ने, सबके पास है ये पेपर. 10. 11. 12. 'In paper, don't do it for 22 question. Don't do it. 11 question. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 'क्रॉस इट', ज्यादा टाइम नहीं है. 19. 20. 21. 22. I'm just showing a difficult question, how to do it. Is it that difficult? It is not. The total number of distinct prime factors of the number 40, C 30.
40C30 का वैल्यू कैलकुलेट करने का, प्राइम फैक्टराइज करने का, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। इसके साथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कोई रिलेशन नहीं है। ओनली थिंग यू हैव टू नो हाउ टू कैलकुलेट एनसीआर, व्हिच इज 40 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल इनटू 30 फैक्टोरियल। ठीक है, nothing is there in this question. Now it tells sir 40 into 39 into 38 ये कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, तुम्हें प्राइम फैक्टराइज करना है। तो 40 into 39 जब करोगे तो 40 का प्राइम फैक्टराइज करने का। जस्ट ए सपोजिटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट। तुम्हें शो करना है तो बाद में दिखाता हूँ कैसे शो करना है। और एक क्वेश्चन देखो, ये सपोजिटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14 इक्वल टू -2 लिखना है, सॉल्व करना है। एक्स के वैल्यू जो होएगा उससे -2 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिठाना है वो वैल्यू और कुछ नहीं करना है। एक्स के जगह पे वो वैल्यू बिठाओगे तो -2 एक्स के वैल्यू वो सेम बिठाने का, तो आंसर आ जाएंगे। सपोजिटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट दैट इज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। व्हाट आई ट्राई टू टेल Achal and everyone, how many questions you got? 1 2 3 5, how many questions you got when I've shown you all these questions? सबको मिला 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन? Achal कितना मिले? Plus 6. 6 is too high, reduce it. Okay. Reduce it. 6 is too high, reduce it. 4 कर 4. 4. तू सोते सोते करेगा 4 राइट, दुनिया इधर का उधर हो जाएगा, 4 राइट होएगा पक्का? होना चाहिए सर। होना चाहिए नहीं, मैं क्या होगा पूछा? बोला दुनिया इधर का उधर हो जाएगा, 4 राइट होएगा? होगा। 4 into 2 8 मिनट चाहिए तुझे 4 राइट करने के लिए, बाकी क्वेश्चन मत कर। ओके 8 मिनट में राइट हुआ, योर कॉन्फिडेंस विल बी स्काई रॉकेट, देन डू व्हाटएवर यू आर इन आई एम। सर टू like correct advanced tests देना doesn't make sense, but to practice I will not tell doesn't make sense. You give advanced test, but your basic has to be correct in quant. Quant has to be from book. एक्सरसाइज एबी के सारे क्वेश्चंस आएंगे क्या तुझे? क्वेश्चन नंबर 29 इंडाइसिस चैप्टर का आएंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 30 सार्ट्स चैप्टर का आएंगे क्वेश्चन, आई एम जस्ट टेलिंग आर्बिट्ररी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 इन रेशियो बोर्सन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 टाइम एंड डिस्टेंस का आएंगे नहीं ना? नहीं। फर्स्ट मेक श्योर दैट इज डन, देन व्हाटएवर यू हैव। ओके जब भूख लगता है हम आइसक्रीम नहीं खाते। ओके सर। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है प्रोसीड्यूर में? Don't do it for, I repeat, don't do it for 20 question. Don't Sir? do it. Yes, Neha. सर एक्चुअली मैं जब एडवांस सेक्शन लेती हूँ ना, देन एट दैट टाइम आई स्कोर अराउंड 20 मार्क्स, बट व्हेन आई एम गिविंग एम कैट इट गोज लाइक फॉर कॉन स्पेसिफिकली इट गोज डाउन टू 1 डिजिट। सो मेरा मतलब मेरा ऐसा एनालिसिस में ऐसा लग रहा है कि इफ़ आई इंक्रीज माई फ्रीक्वेंसी ऑफ एम कैट देन लाइक वो या तो मैं थक जा रही हूँ वो एंड तक, सो शुड आई इंक्रीज माई फ्रीक्वेंसी मतलब एम कैट देने का? No. देन सर सेक्शनल में सर कैसे आ रहे मार्क्स बट एम कैट में नहीं हो पा रहा है? इवन इफ आफ्टर टेस्ट व्हेन आई ट्राई टू सॉल्व ओनली दैट पार्ट देन वो क्लिक होता है कि अच्छा ये ऐसे कर सकते थे। Have you done the exercise which you have just done? ये पेपर में अभी जो किया तूने किया? नहीं, आई गो सीक्वेंशियली एक एक क्वेश्चन सर। नहीं, अभी जो तुझे करने को बोला वो किया मेरे साथ? हाँ अभी किया, लेकिन पहले नहीं करती थी ऐसा। अभी किया या नहीं किया? अभी जो बोला किया, ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी हाँ तो करने को बोला ना सबको, किया ना? हाँ कितने क्वेश्चंस मिले? सर मेरे तो 3 हुए थे अभी। अभी 3 आया था ना? हाँ 3 कर करेक्ट, चौथा मिलेंगे, 5वां भी मिलेंगे, 6वां भी मिलेंगे। ठीक है, देख हो क्या रहा है, देयर इज अ स्ट्रेटजी प्रॉब्लम, नो स्ट्रेटजी वर्क्स विदाउट नॉलेज। ठीक है, दैट इज फॉर श्योर। सिर्फ स्ट्रेटजी से काम नहीं होता है, बट स्ट्रेटजी आल्सो हैज अ रोल टू प्ले। स्ट्रेटजी इज सिंपल, आई एम गोइंग टू कैंसिल आउट एंड डोंट डू इट फॉर 20 क्वेश्चन।
Again and again repeat the same one. Don't do it for 20 question. Do it for 11 question. Half of the paper 20 minutes, half of the paper 20 minutes. All of you understand. Okay. Now, Okay, sir. if you are getting क्वेश्चन नंबर 1 क्रॉस, जो इसमें थोड़ा सा भी डाउट है, क्रॉस अचल को जैसे बोला 4 क्वेश्चन काफी है, मुझे 6 क्वेश्चन नहीं चाहिए, तो 11 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से तुझे 3 क्वेश्चन मिलना चाहिए 11 में। मैं दिखाऊं, अभी 4 मिनट ही है प्रेस बचने का। क्वेश्चन नंबर 1 जनरली होना चाहिए सबको, 2 रूट निकालना है और उनके एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, जनरली होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे से नहीं होएगा, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं होएगा, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं होएगा, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं होएगा, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 होना चाहिए, दिस इज टाइम एंड वर्क क्वेश्चन, इन जनरल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए एवरेज मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 9 बेसिक्स हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, ये नंबर्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, मतलब उनके रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। 5 क्वेश्चन, ये सर्कल नहीं आया। 11 क्वेश्चन, चलो थोड़ा डिफिकल्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, 3 प्रोग्रेशन है, उसके सीरीज ढूंढने हैं मुझे, उनके जो इंटरसेक्शन है वो ढूंढने हैं। तो 4 क्वेश्चंस मिले, लेट्स से तुम्हें 3 क्वेश्चंस मिले, ठीक है। सो यू डू दिस 3 क्वेश्चन, 3 into 2 6। नाउ ये 3 क्वेश्चन तभी हो सकता है, ये सेक्शनल टेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ना एमकैट का प्रॉब्लम है, दिस इज द बेसिक। आई हैव टू गेट दिस करेक्ट एंड दैट हैज टू बी डन। I repeat, क्या करना है, this has to be done. First step, go to previous year paper analysis. I have shown how to do it. तुम खुद कर सकते हो। Then you have to do chapter by chapter. And why I have taken this chapter, I have shown you that these chapters are giving you lot of questions in the paper. I have assumed it will be 8. It may be 9, 10. Even if it is 6, doesn't matter. These are your bread and butter chapter. Simple equation, ratio proportion variation, percentage, profit and loss, SICI, average mixture, time and work, time and distance. ये चैप्टर्स सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे आना चाहिए जो एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी में है बुक का, एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी। ये हो गया तो मुझे एडवांस्ड सेक्शनल टेस्ट के भी आंसर्स आएंगे, मुझे एमकट का भी आंसर्स आएंगे। हो नहीं सकता जो मुझे पता है वो क्यों नहीं आएंगे, टेस्ट का नाम चेंज करने से थोड़ी ना मेरा आंसर नहीं आएगा। देन दिस चैप्टर्स, स्पेशल इक्वेशन, एपीजीपी सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, इंडाइसेस, चार्ट्स, ये चैप्टर्स के क्वेश्चन बुक से एक्सरसाइज ए एक्सरसाइज बी होना चाहिए। टेस्ट लिख, बट यू कैनॉट अलोन राइट टेस्ट एंड इंक्रीज योर स्कोर, इट इज नॉट पॉसिबल। मुझे जितना आता है माई टेस्ट विल रिफ्लेक्ट दैट ओनली। I've given a tentative schedule, 5-6 tests. You can take 7, but writing everyday test will not help you much. It will not help you anything. 6 is a very good number of tests. तुम्हारे पास अभी कितने दिन है? Effectively you have, let's say 26, 27 days. 27 days. Last 2 दिन कुछ नहीं पढ़ोगे, कोई नहीं पढ़ता है, तुम भी नहीं पढ़ोगे. Let's say 27 days. 27 days में if you write 27 tests, then you don't have any time to prepare only. बुक के क्वेश्चंस आना चाहिए, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, ये आना चाहिए। उसके बाद टेस्ट में एप्लीकेशन होना चाहिए। टेस्ट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे करना है मैंने दिखाया, एंड सबको ये एप्लीकेशन करना है। सो यू राइट MCAT, 6 MCAT you write, don't take SAMCAT. Instead of that, you take MCAT. 6 MCAT is good enough number. Yeah, if that answers your question. Okay, sir. Follow who next? Sir, suppose I have given only 3 MCATs till now. Yes. So, how many MCATs should I give in this month? I have Yes. done exercise A and exercise B, but sometimes in the mocks I'm not able to apply. I think I'm not able to
6 test, if you apply what I told, it is good Okay. enough. You can 6. take a 7th one. 6 is a good number. 25 days में 2-3 दिन का break लोके, if you are doing it 6, you make it 7. Don't go infinite number of tests. That doesn't help. But 6 is a very good number. I've given only 3, but many people suggest that we have to give minimum 10, 15 tests or 20 There is more. nothing minimum or maximum. There is nothing minimum or maximum. We are doing 25 tests, believing that it is good enough number, which is actually 20 is a good enough number. But the point is, we are currently sitting in 1st November, right? We cannot get back in time and make it January, make it February, make it. We are sitting in November, so we have to plan according to November. We have roughly 25, 26, 27 days. Last 2 दिन कुछ पढ़ाई नहीं होते, टेंशन होते हैं. ओ सबको होगा टेंशन. Right. So, I have solved exercise A and B, but perfectly all right. no. So suppose I can give mocks every 2 days, then I'll understand the एक test. दिन का तो गैप लेना ही है. Yeah. Okay, sir. 6, 7 test is a good number. If you want to take one more, you decide in that point in time. But 6, 7 is a good number if you can apply your strategy. What I told, if you can apply that. Because people usually say that we have to give 10. Actually, that's fine. ऐसा कुछ नहीं है. Those who ideal number again I told you ना, something hovering around 20 होना चाहिए था. Now Krish, can we get back to March or April? We can't. We are in November, right? We'll have to Right. plan accordingly. Thank you, sir. Now, Right. only writing test will not help you ना. तुझे कुछ नहीं आता है, उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे तुम? Right. That's why I told that I've already solved almost only 2-3 chapters are left for which I have not solved A and B. That is for the quant part. What about DI part, LR part? What about English part? There are 3 sections. That I have not at all done properly. Correct. So you probably have done a lot of things. I'm not telling you I'm not done, but don't write everyday test. Okay. मुझे भूख लगा है बोल के मैं 5 डोसा खा लूंगा एक दिन में, ऐसा नहीं चलेगा ना. तो there is no point in doing it. Right. Thank you, sir. बोलो, who Yes, else sir. is having a question? हाँ, Roshan. आपका जो अभी मेथड आपने आज दिया है उसको फॉलो करने के बाद मेरे पास अभी एमकैट्स में फिलहाल से 3 ही एमकैट्स बाकी है, एक मिस्ड और अभी आने वाले 2. तो Correct. वो 3 Samcat. एमकैट्स कितने करूं सर? टोटल नंबर 6, 7. तो तेरा 3 एमकैट बचा है, तो 3 सैमकैट लिख, 4 लिख मैक्सिमम. ओके सर. और सर मेरे पास कुछ मॉक पेपर्स है, मतलब किसी दूसरे मटेरियल के, तो उसमें से That also you कितने can अटेम्प्ट write. I करने don't चाहिए? mind you write someone else's mock paper, but don't write mock every day. That will not solve your problem. तो सर अभी मिनिमम 2 डे या 1 डे गैप कितना रखूं? 2 दिन गैप रखना चाहिए, क्योंकि मैं एक एमकैट लिखेगा ना, तो मुझे पता चलेगा मैं कुछ गलत किया, कुछ मुझे चैप्टर ठीक करना है, कोई जगह पे मेरा लैकुना रह गया, तो those things has to be rectified only ना. If I know more, I'll score same. So tomorrow when I'm going to write another MCAT, I should know better, right? That is the basic purpose. 2 दिन के गैप होना चाहिए in general. ओके सर. Thank you. 1 or 2 extra you can always go for it. Those are already getting very good marks in particular section or overall. You can always ignore and you can go for 1 or 2, 3 more tests. But my point again is remaining simple, that you don't write test every day. That will not increase your score. Your score will increase because your knowledge base is increasing. और सर 25th के बाद कोई भी टेस्ट नहीं लिखना है, लाइक नहीं बिग लिखना है, टेस्ट नहीं लिखना है. दैट इज फॉर श्योर. कोई मतलब नहीं है 25th के बाद टेस्ट लिखने का. फुल लेंथ सेक्शनल लिख सकते हो. ओके सर. ठीक. एंड राइट एमकैट इन योर स्लॉट. कैट के एडमिट कार्ड आ जाएंगे ना, तो राइट इन योर स्लॉट. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली दो पेपर तो स्लॉट में लिख लेना अपने. 2-3 पेपर. कब आ रहा है एडमिट कार्ड? 8 तारीख के बाद ना. 5 तारीख लिखा है आई थिंक वेबसाइट में. हाँ, तो 4-5 मॉक तो हो जाएगा उसके बाद. ओके सर. थैंक यू सर. एनीवन एल्स? अनम्यूट करके पूछना, जल्दी हो जाएगा.
सबको पता चलेंगे. Anyone else? Any other question? No. Sir, बोलो सुजल. sir, can you show the PPT from the start, please? I'll take screenshots. Yes. Chal, this is the first paper. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. हो गया. Thank you, sir. आज DILR के अटेम्प्ट कुछ नहीं है, तो 1 MCAT per day. Take the previous MCAT and solve all DILR set. All DILR set. One paper, all DILR set. One paper, all DILR set. ऐसे. अच्छा, पहले बुक के साम होना चाहिए. सारे POIQ बुक में दिया हुआ है. सारे POIQ MCAT में दिया हुआ है. POIQ is very important to have an idea how CAT questions look like. I'm not denying that. But doing only that question will not solve your problem in that particular chapter. कोई question तो repeat नहीं होगा. CAT 22 का question CAT 25 में आएंगे क्या? CAT 23 का question CAT 25 में आएंगे क्या? नहीं आएंगे. Same chapter आएंगे, same concept आएंगे, question different होएगा. It is all of you. Please understand why POIQ is important and why it is not sufficient enough. POIQ is important because it came in CAT paper, right? It is a nice question, and this type of question they give, you should be familiar. Why that is not sufficient? Same chapter can come, same concept can come, but a different question. You will not be able to do it. Yes, Raj, you can do intermediate test, no issues. All of you can do whatever material you have done. But is it reflecting your test score, Raj? Are you getting that 5 plus, 10 plus correct in that quant section? If not, then there are difficulties. Yes, Garv, you must revise. And for all of you, must revise all the chapters. Sir, Yes, Yash. sir, now I am like giving a mock every day. मतलब सुबह mock देता हूँ. Don't And do after that. that, Don't give full length mock every day, Yash. Don't do it. I'm meaning it, everyone. Don't give full length mock every day. sir, तो alternate days. Yash, मुझे बता. एक सिंपल क्वेश्चन सबको पूछ रहा हूँ. मुझे आज टेस्ट लिखा मैंने, मेरा स्कोर आया 100, मेरा स्कोर आया 40, मेरा स्कोर आया 60. कल सुबह मैं टेस्ट लिखूंगा, क्यों चेंज हो जाएगा वो? मतलब why it will change? Let's say my score today is 40, tomorrow why it will become 45? There are two ways it can become. One, the question came which I know, or second, I perform better. तो second के ऊपर भरोसा रखना है ना. You perform better only if you know better than today. So is it possible if you are writing a test for 2 hours, then when you are going to study on
to improve your weakness. When you are going to do this, Sresh? Sresh, are you there? Yes, sir. If you have a different opinion, you can always tell. I'm giving my perspective, and if I'm not logical, you can always question. No, sir. What I am doing now is सुबह मॉक देता हूँ. Then afterwards जो भी unattempted questions है throughout the 3 sections वो मैं attempt करता हूँ. तो DILR में अगर मैंने एक सेट सॉल्व किया इन द मॉक, तो बाकी के 3 या 4 सेट जो बचे वो बाकी टाइम में सॉल्व करता हूँ. DILR में हो जाएंगे, VRC में भी में नहीं सेम. होंगे, क्वांट में नहीं होंगे. वो दोनों सेक्शन भी कैट में है. मुझे तीनों सेक्शन में अच्छा करना है. एक मॉक लिखना इज ऑलवेज ए हेवी टास्क. 2 घंटे का मॉक एग्जॉस्टर्स. And all of you are writing mock. वो फीलिंग आता है बहुत बार. All of you are writing mock, and you know that is exhaustive. You feel bad, you feel good. There are a lot of emotional affables, which happens. So it exhausts us. So let's say I'm writing the mock from 9 o'clock in the morning to 11 o'clock. So almost my morning and afternoon is gone. Then in the evening you are studying or preparation again, or in the afternoon, late afternoon you are studying or preparation again. You don't have enough time devoted to do all these 3 sections. You don't have it. English RC passage will not get repeated. Quant question will not get repeated. Only thing which may happen, the concept of DILR still can get repeated, and that will happen. That's why I told DILR should be done for mock. RC passage same topic का हो सकता है, same passage तो नहीं मिलेंगे. Quant same topic का हो सकता है, same question तो नहीं मिलेंगे. Let's say I'm not getting a quadratic equation question. I'm trying to get it correct. I got it correct. वो मॉक का क्वेश्चन राइट कर लिया. नेक्स्ट मॉक में क्वाड्रेटिक दिया, डिफरेंट क्वेश्चन दिया. तो आई हैव टू डू द एंटायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर. उसके लिए टाइम कहाँ है मेरे पास? समझा क्या श्रेयस? हाँ सर. Curve, yes. Whatever you are not getting, you please solve that again. English. हाँ रोशन, एक मिनट. English passage will not get repeated. Quant question will not get repeated. The same chapter will get come. DILR conceptually, अगर तुम 20 दिन में 4 सेट कर रहे हो, 20 into 4 80 सेट, conceptually will be clear with all the concepts, all the types. तुम्हें नया कुछ नहीं मिलना चाहिए पेपर में. इंग्लिश और क्वांट में नया मिलेंगे. यस रोशन. सर आप एक बार वो वेबसाइट में दिखा सकते क्या प्रीवियस ईयर वाला पार्ट? timeforeducation.com में जा. हाँ सर उसमें. एक बार खोलते हैं. timeforeducation.com में गया मैं. ये टेस्ट एनालिसिस है, दिखा. कैट एमबीए. कौन सा यार डालू बोल? 2024. 2024. आ नहीं रहा है. आया. बोल कौन सा मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, कौन सा स्लॉट? आफ्टरनून. सिर्फ इंग्लिश दिख रहा है यहाँ पे. कुछ तो गड़बड़ चल रहा है. खुद भी खोल. कुछ तो गड़बड़ चल रहा है मेरे में. एक बार खोल अपना साइट चल रहा है या नहीं. मेरा 24 खुला है, उसके बाद क्या कोई स्लॉट में जा. मेरे यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है. सिलेक्ट यार तो आ नहीं रहा है. साइट का प्रॉब्लम है या लैपटॉप गर्म हो चुका है, पता नहीं.
हाँ सर, दिख रहा है सर, क्वेश्चंस दिख रहे हैं दिख पर रहा है? हाँ सर वो चल क्वांट में चल, मुझे मेरे यहाँ रेशियो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। दिख रहा है? हाँ चैप्टर सर वाइज दिख रहा है? हाँ सर, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हाँ, दिख रहे हैं। तो गिन ले एक बार सारे अरिथमेटिक क्वेश्चन देख, 7-8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन होना चाहिए। रेशियो प्रोपोर्शन पर सिंपल इक्वेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, SICI, टाइम एंड वर्क, एवरेज मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस। देख 9 क्वेश्चन होगा मिनिमम, 10 भी हो सकता है। कितना क्वेश्चन मिल रहा है? 8 मिल रहा है। 8 मिल रहा है। 8 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनीवे 9 क्वेश्चन आया था सब में, एक सेट में 10 आया था, ठीक है। चल 8 क्वेश्चन ही पकड़ते हैं, 8। यू हैव टू डू 4 प्लस करेक्ट, ठीक है। और अलजेब्रा देख, क्वाड्रेटिक तो दिखा रहा है, कोऑर्डिनेट क्वाड्रेटिक, एपीजीपी, स्पेशल इक्वेशन, इंडाइसेस, साइड्स। एक मिनट। अच्छा नहीं वो नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। हाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है, मेरा अभी तो खुल ही नहीं रहा है। अभी स्क्रॉल हो रहा है, वो अभी दिखा रहा है। Aisha, which chapter you are telling? Time and work, time and distance, you will have to do. रेशियो प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम है आयशा, ठीक कर लो। कितना मिला रोशन? यस आयशा, कितना मिला? 7-8 9? नहीं सर, एक मिनट, अरे चल क्यों नहीं रहा। एपीजीपी, क्वाड्रेटिक, इंडाइसेस, साइड्स, स्पेशल इक्वेशन, लॉगरिथम। लॉगरिथम छोड़, एक क्वेश्चन तो लॉगरिथम का होगा ही पेपर में। सर ये ILS क्या है सर? लॉगरिथम, इंडाइसेस, साइड्स, लॉगरिथम। 2 है तो एक होगा इंडाइसेस साइड्स का, एक लॉगरिथम का। एक है वो लॉगरिथम ILS 1 दिया है। लॉगरिथम छोड़ दे, तो उसके सिवा बोल कितना है। 7-8 दिखेंगे। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, एपीजीपी, स्पेशल इक्वेशन, इंडाइसेस, साइड्स, लॉगरिथम छोड़ दिया। पता कितना? 7-8 मिले? 4-5 दिख रहा है खाली, सिर्फ इक्वालिटी से क्वाड्रेटिक 5 ही दिख रहा है। अच्छा चल 5, 2 क्वेश्चन कर, 5 के 2 कर। कितना हुए? अरिथमेटिक के 4 या के 2, कितने हुए? 6। हो गया तेरा 70%। नाउ गो फॉर द 7th वन, गो फॉर द 8th वन। Aisha and everyone, do ratio proportion variation well. Ratio proportion variation. This is the chapter you have to do. This is the most crucial chapter. You have to do time and work. You have to do time and distance. There is no other option with us to get into. You want to get a 99.99 percentile, you have to do time and work, time and distance. You want to get 70 percentile, you have to do it. You want to get 95 percentile, you want to do it. You have to do 90 percentile, you have to do it. You have to do it. This is very basic. Aisha and everyone, time and work, time and distance करना है। सर सर VARC के लिए भी आप कुछ सजेस्ट करिए ना, मतलब पहले RC करना चाहिए, पहले VA करना चाहिए? 2 RC, VA, 2 RC। टोटल कितना, 4 RC करना है? 3 RC तो करना ही है, आम जाना है तो। आम जाना है तो 3 RC करना ही है। 3 तो होता नहीं है सर, 2 ही होता है। तो इसलिए 14 मिनट का प्रैक्टिस करना है। मैं इंग्लिश टीचर हूं नहीं, लेकिन ये 14 मिनट, देखिए स्लाइड देख, 14 मिनट 2 RC, 14 मिनट 2 RC, ये प्रैक्टिस करना है हर रोज। सर तो आपको कितना मार्क्स आना चाहिए VARC में? This is the scoring section. I think you should look at 30 plus minimum. Those who are good at it, go for 40 plus, go for 45 plus, go for अभी 50 मेरा plus. 24 28 के बीच में आता है। तुझे 30 प्लस करना ही है किसी भी हालत में। तो हर रोज 14 मिनट में 2 RC, 14 मिनट में 2 RC। तू जो हर रोज टेस्ट लिखता है वो बिना टेस्ट लिख के ये कर। 14 मिनट में 2 RC प्रैक्टिस कर, 10 मिनट का गैप दे, 14 मिनट में 2 RC प्रैक्टिस कर।
10 मिनट का गैप जो दिया यहाँ पे, वो कैट के दिन वहां पे VA करना है और एम कैट के दिन वहां पे VA करना है. दैट इज द वे इट इज. ठीक है 14 मिनट RC और 12 मिनट में VA करना है. तो 14 मिनट का 15 मिनट हो सकता है. दैट इज ऑल राइट. तो 10 मिनट का गैप देके फिर से करना ही है. 10 मिनट का गैप मतलब पहले 14 मिनट में 2 RC कर लिया, उसको सॉल्व कर, कैसे सॉल्व करना है इंग्लिश टीचर को पूछ, उसके बाद 10 मिनट का गैप दे, फिर 2 RC ऐसा. Achal, these are the slides. First, this is the first slide for all of you. This is the first slide. Second slide. Third slide. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Sir, for DILR, you were saying every day 3 to 4 sets of some One material. MCAT, all the sets. One MCAT, all the sets, and Yes. we'll cover most of the most of the different types of sets. 20 days if you're doing it, you are solving 80 sets. 80 concept है नहीं DILR के. नहीं है. Okay. You don't have 80 concepts. All from the MCATs from 1 to 20, right? You have to take some as your base, right? Take MCAT as your base. Okay, right, got it. There are so many materials you have. All of you are confused with material set, right? 20 दिन में इतना ही हो सकता है ना, 20-25 दिन में, इससे ज्यादा हो नहीं सकता. मैं ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट भी लिखूं, मैं MCAT भी करूं, मैं बुक में भी कंफ्यूज हो जाऊं, आधा टाइम मुझे टेंशन आएगा, तो नहीं कर सकता. तो टेक ए बेस एंड फॉलो इट. सिंपल. Okay, sir, got it. Yes, Ananya, you can write the previous year mock paper. Of course, PYQ is very important. No one is doubting it. But only solving that will not solve your problem. That is the only point I wanted to make. Ananya, write one mock. Take a previous year paper and write. सर Yes. सर जो नोन टॉपिक्स रहता है उसका डिफिकल्ट क्वेश्चन जो लीव करना चाहिए वो समझ में नहीं आता है और उसमें फिर टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है. ऐसा नहीं होगा. Practice. You need to practice a lot. You need to practice a lot. You have to identify the questions which you know. And I told you how to do it. Cross in the first go. 11 question 20 minutes. Cross in the first go. 1 नहीं होएगा, 2 नहीं होएगा, 3 नहीं होएगा. जो होएगा ही, दुनिया इधर का इधर हो जाए. That is the first question. And if you are not getting a single question in the paper, possible, still you can do it in 20-25 days. You have to go to the book. You have to do each and every question from exercise A and exercise B. Book and book for quant. I repeat, it is book and book. Exercise A, exercise B. कर चुके हो, रिवाइज करो. नहीं किया, करो. Sir, ओके to practice DILR, through AIMCAT, we have to wait until the VARC का time of 40 minutes होता है. 40 minutes के बाद DILR open होता है ना sir. हाँ. So how to practice it sir? प्रीवियस पेपर तो तेरे पास है या नहीं? Okay. MCAT 25 You है या said नहीं? about previous papers, not AIMCAT sir. MCAT प्रीवियस पेपर मतलब MCAT 25 है या नहीं तेरे पास? हार्ड कॉपी भी है, सॉफ्ट कॉपी भी है. हाँ okay sir. MCAT 24 है या नहीं? हाँ sir. हाँ, तो MCAT 25 कल करना, MCAT 24 नेक्स्ट डे करना. शेड्यूल बना ले. सेकंड को MCAT 25 करना है, थर्ड को MCAT 24 करना है, फोर्थ को MCAT 23 करना है. समझा? हाँ sir, but I don't have all the AIMCAT hard copies sir. अच्छा ठीक है. कितना कॉपी है? गिन, अभी गिन मेरे सामने और बता. हाँ okay sir. इनके बोल. हाँ okay sir. I'll go and collect it from the center sir. अभी तो गिन, अभी कितना है वो तो गिन.
पहले जो नहीं है उसका टेंशन, पहले जो है वो हाँ, तो अब अभी अभी 8-10 है सर मेरे पास। 8 है ना। 8 हाँ दिन सर। मतलब 9 तारीख तक तेरा हो गया ना, 9 नवंबर तक हो गया, हाँ हाँ सर। हो गया ना। तो हाँ 10 नवंबर का खाना नहीं है तेरे पास, तो अभी क्यों रो रही है? sir, I forget that I have hard copies until you said about it, sir. हाँ Thank you, sir. ठीक है, अभी समझा ना, तो इतना टेंशन कम कर। 10th का खाना नहीं, आज का खाना है ना, तो आज का कर पहले। हाँ सर। हाँ, permutation combination. Achal, I will not suggest anything skip. I am just telling that bread and butter get ready and then go for it. Permutation combination. बेसिक तो पता ही होना चाहिए, एनपीआर क्या है, एनसीआर क्या है, ये सब सबको आता है, तुम्हें भी आते हैं। Get your arithmetic algebra numbers in place, then go for anything else in the world. अच्छा, if that means skipping, it's skipping. Raj, advanced booklet is done. Should I move forward with PIQ or MCAT? Raj, how many questions you are getting correct? मटेरियल की कोई कमी नहीं है, टाइम के 10% मटेरियल करोगे तो IIM अहमदाबाद जाओगे, ऑल ऑफ यू। 10% कर लेना जो मटेरियल दिया हुआ है, सिर्फ फोकस होके करो, डोंट डू आर्बिट्री। Rushika, if you find ratio, proportion, percentage, all these things difficult, you have to sit with a faculty member and get it solved. You have to do this. Without ratio, proportion, variation, percentage, time and work, time and distance, you will not be able to clear MSCT, you will not be able to clear SNAP, you will not be able to clear NMAT, you will not be able to clear ZAT, you will not be able to clear CAT. So you have to get these things properly solved. Class चाहिए तो क्लास के लिए बोलो, डाउट क्लियरिंग चाहिए तो डाउट क्लियरिंग के लिए पूछो, बट ये तो करना ही पड़ेगा। अरिथमेटिक सबको करना पड़ेगा, कोई भी एग्जाम क्लियर करना है। तुम्हें 99 परसेंटाइल चाहिए, अरिथमेटिक करना पड़ेगा। तुम्हें 70 परसेंटाइल चाहिए, अरिथमेटिक करना पड़ेगा। यू हैव टू डू अरिथमेटिक। नंबर सिस्टम करने के लिए 2 घंटा चाहिए रोशन, सब कुछ हो गया दुनिया का, तो कर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पूरा चैप्टर करने में 2 घंटा चाहिए, 2 घंटा भी नहीं, आधा घंटा का हैंड आउट है और आधा घंटा बुक के लिए चाहिए। Misty, you have any question? Misty, do you have any question? Otherwise, mute yourself, please. Misty, if you have any question, ask. Otherwise, mute yourself, please. Keval, what is your query? We can see solution only if we have attempted it. But I am solving DLR from hard copy of MCAT. Do it. What is the problem, Keval? As I told you for Pravina, you take MCAT 25, you solve DILR. You take MCAT 24, you solve DILR. That is how you should do it, Keval. Disha, you revise. That is the first thing. And second thing which I told you followed, right? 11 question, 20 minute. Disha. So follow that. 11 question, 20 minute. एक करके दे कभी ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट में, शाम को ही, रात को ही, एक क्लास खत्म होने के बाद। Cancel it out and revise. Revision is definitely important. Your problem is revision. Deval, I have answered your question. How much time to give for revision? As much time as needed, Raj. Yes, Sujal, it can be used for revision. Online sectional test also can be used for revision. केवल I didn't get your question. तेरे पास, तूने जो हार्ड कॉपी है या नहीं केवल तेरे पास?
Keval, do you have a hard copy or no? और सॉल्यूशन तो दिखेंगे ना ऐप में. Rugbe, don't skip your college exam. Don't skip your college exam. Take your college exam seriously. कैट फिर से लिख सकते हो. दिसंबर में लिखोगे तो स्नैप एनमैट जैड भी है. डोंट स्किप योर कॉलेज एग्जाम. गिव योर बेस्ट शॉट फॉर योर कॉलेज एग्जाम. प्लान फॉर कैट along with it. Whatever happens. कॉलेज एग्जाम के मार्क्स सब जगह पे चाहिए. सब जगह पे चाहिए कॉलेज एग्जाम के मार्क्स. कैट के बाद भी चाहिए होगा. आईएम में जाने के बाद भी चाहिए होगा. तो दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट. Every company comes in the campus will look for your percentages. Keval, how many MCAT you have written? Keval, how many MCAT you have written? 6, 7. Start with this and then keep on writing this 6 MCAT which I asked you to write. So that will make it another 6. Get this 12 done, then we'll look for it. The 13th one, how to get. So let's say you have written 6. Start with that 6 and you are going to write next 6, correct? So that 12. Let it done, then we'll figure out what to do. Got it, Keval? तो 12 तो हो जाएंगे ना. उसके बाद देखते हैं. Maybe you have to write one more MCAT. Maybe you'll have to go for another material set. But 6 you have written and 6 you are going to write. Anyone else? Any other question? Mishti, would you please unmute and talk, or mute yourself? Rushika, you need only MCAT will not improve. You have to revise. You have to improve on things which you are, because you know same, you will score same. Nothing will change. Only MCAT writing will not improve your score. You have to go and do the book. Rushika, you have to do exercise A and B for ratio proportion. For all the arithmetic chapter, algebra chapter, you have to do book, exercise A, exercise B. Book करना है सबको. Pratham, what is your query? Unmute करके बोलना. I am scoring 70% in DLR sectional test. What should I do? Same MCAT, one MCAT per day. MCAT. PYQ कर, मना नहीं कर रहा हूँ. आफ्टर MCAT उसके बाद PYQ कर ले एक आध सेट. वही सेम थिंग थोड़ा डिफिकल्ट करके हम लोगों ने MCAT में दिया है. PYQ के तुझे आंसर्स नहीं मिलेंगे, दैट इज अ फास्ट. सेकंड थिंग, सेम सेट नहीं आएंगे. तो यू हैव टू डू लॉट ऑफ सेट्स ना. सेम सेट सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे. प्लीज अंडरस्टैंड इट.
All of you understood this part. Same question, same set नहीं आएंगे. You will have to clear things conceptually. समृद्धि 1 MCAT per day. 1 MCAT per day. जितना सेट है 4-5 जितना सेट है. Somebody got it? 1 MCAT per day. In exam, welcome Achal, welcome all of you. Those who don't have any question, you can leave. Those who have question. In exam, you should do all sets which you are getting correct. Na? If you are practicing enough for next 25 days, you are going to do 100 sets. If you are at least doing 80-90 sets, I think you will be able to do 2-3 sets. Welcome Raj. जितना भी सेट मिले तुझे 5 सेट मिल रहा है समृद्धि, आर यू गोइंग टू डू ऑल 5 सेट्स और नो? व्हाई शुड यू लीव एनीथिंग? समृद्धि, हैव यू रिटन एनी एग्जाम इन लाइफ जहां पे तुम्हें आंसर्स पता था तुम छोड़ के आए? हैव यू रिटन एनी एग्जाम समृद्धि? आदित्य, यू कैन नॉट डू इट फॉर क्वांट बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन, क्वांट के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे. यू हैव टू डू द चैप्टर. समृद्धि, हैव यू रिटन एनी पेपर? How you know everything but you have not done? Which paper? You know all 5 you have written for 10 standard में. You are welcome, Aditya. You can unmute yourself and ask anyone. Samriddhi, what I told you understood, right? If you know, you will be able to do it. Improve your knowledge base and you will be definitely able to do it. If you know 4, you will do 4. You will know 5, you will do 5. You know 3, you will be able to do 3. Time will not matter. You have to improve your knowledge base, Samruddhi. And when you are practicing, put it in a time limit. You have to increase your knowledge base as well as you have to put it in a time limit. Last year लोग तीसरा सेट करने के बाद चौथा सेट भी चले गए थे. कैट 22 में नहीं हुआ था, लोग 2 सेट किए और नहीं हुआ. और कैट 23 में भी नहीं हुआ, 24 में हुआ. People reach 4th set also क्योंकि DI के 3 सेट कर लिए थे, उसके बाद 4th set they have tried to do. You don't have any fixed number. Only thing what you can do is you can improve your knowledge base so that you can do all the easy sets which is coming in paper. Improve your knowledge base. सारे MCAT के सारे सेट आना चाहिए. That is the basic idea. Robina, don't look at hours. Don't. I'll put in this way. ये मेरा daily task होना चाहिए. जितना भी टाइम लगे. 4 RC, 10 VA question. DILR 1 complete MCAT. DILR 1 complete MCAT.
एंड शाम को क्वांट. लेट्स से एक्सरसाइज है. कितने क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज में? 30 to 40 क्वेश्चन. और एक्सरसाइज भी बुक से 30 to 40 क्वेश्चन. ये होना चाहिए. जितना घंटा लगे उतना घंटा देना है. मेरे हिसाब से 4 आरसी 10 भी करोगे तो यहाँ पे समथिंग अराउंड 2 आवर्स यू विल स्पेंड. ये करोगे तो रफली 3 आवर्स यू विल स्पेंड एंड दिस विल गिव यू अनदर 3 आवर्स. तो 8-9 आवर्स यू शुड. कम में भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है. तो टास्क वाइज. Probina, if that answers your question. You're welcome. Then I am scoring about 26, 33 marks in quant, but the percentiles are still below 90. How can you improve more? You can improve your score, you cannot improve your percentile. Percentile depends on how many people are writing, what is the difficulty level of the paper. If you are getting 33 and getting below 90 percentile, that will definitely come more than 95 to 98 percentile. That is happening because number of people who are writing MCAT is less. Nothing else is happening. That you don't worry about. 30 is a very good score. 30 will definitely give you 95 percentile in any paper. 051, if I have answered your question. You improve your score, you can go for 36, 39, 42 also. 30 will give you 95 percentile in any paper. You are not getting it because number of people who are taking MCAT is less now. CAT में ज़्यादा लोग लिखेंगे. Aditya, you revise. Revision. That is very important for each one of us. MCAT कम लोग लिख रहे हैं तो score improve करो. Score. All of you can go into 36, 39, 40. I don't mind. और क्या क्वेश्चन है? सर मुझे लाइक इश्यू ऐसा है कि सिंपल इक्वेशंस एंड रेशियो प्रोपोर्शन आई ट्राइड क्वेश्चंस लाइक एक्सरसाइज ए एंड बी but after 6 or 7 questions I couldn't solve it. So in this case what should I do? You should immediately write a mail to doubts and whichever center you are from to that center that I need a doubt clearing session by this time. ठीक है? And get it solved. आज बैठ के पूरा solve होने के बाद सोने के बाद कल परसों today is Saturday, right? Sunday will be too busy. Monday, Tuesday, go to the center in person and get it done. Do some 15-20 problem with the sir, mark and get the concept clear and then come back. You have to get it done. Without equation, ratio proportion, you cannot clear SNAP, NMAT, MSCT also. Please understand it. And if you are clearing these 2 chapters, all the other chapters in CAT is also going to be very easy. So first you solve tomorrow and day after. Take 2 days for yourself and request for a doubt clearing session or a session for yourself on Tuesday, Wednesday by max and get these 2 chapters solved with the faculty member. But first you try yourself by looking at solution and whatever other resources you have by tomorrow and day after. एक दिन 2 दिन खुद ट्राई कर. सॉल्यूशन है तेरे पास, बुक के सॉल्यूशन है, हैंडआउट के सॉल्यूशन है आप में, तो ट्राई इट. Even if you don't understand anything, na, you'll better understand when you go and meet the faculty member and try to solve it and get it solved in next 3 days time, and you'll be better off and you will still be able to clear CAT. I'm telling you. तो संडे ट्राई कर खुद, मंडे ट्राई कर खुद, सॉल्यूशन देख देख के समझ के खुद ट्राई करके, एंड देन ट्यूसडे फैकल्टी मेंबर के साथ बैठ के या वेडनेसडे फैकल्टी मेंबर के साथ बैठ के गेट इट सॉल्व. You have to do simple equation ratio proportion. Without that you can't go anywhere.
Those who get a 99.99 percentile, they have to get simple equation ratio version correct. Those who will get 95 percentile, they will get it correct. Those who will get 70 percentile, they have to get it correct. Very basic minimum chapters, you have to do it. Yes, sir. Sorry to interrupt, but still मैंने like doubt sessions लिया. Even after doing that, still my concepts were not clear for ratio proportion and simple interest. So in this case, what should I do? Like Yeah. I have raised doubt solving session. फिर मेरा हो भी गया sessions, but उसके बाद भी like मुझे concept clear नहीं हुए. In this case, what should I do? I don't think any extraordinary method is there. I suppose that you try it tomorrow and day after. That's why I'm asking you to try it tomorrow and day after. Figure out that where the problem is lying, and then go and tell the doctor. Let's say I'm your doctor. Then you go and tell that this is my specific problem. This is not happening, and then I'll solve, or someone other faculty member who is there available at that point in time in your center will solve and show you that how to do it. And still, if you have doubt, you'll have to get it clear then and there. You cannot keep that to your home and then figuring out it is not happening. It is not possible. So that's why you should give your time tomorrow and day after. Look at the solution, look at the previous doubt clearing session, what you have done, and then you have to go again and meet the faculty member and ask that sir ये समझ में नहीं आ रहा तो और एक बार समझा दो, so that I can do it. It is not my ability to do it. It is your ability to do which will take you to college, correct? तो एक्चुअली पूछने का नहीं सर ये समझ में नहीं आया मुझे खुद करना है तो और एक बार बोल दीजिए. तो you have to ask this way. Simple. एक बार कल और डे आफ्टर ट्राई कर, उसके बाद जा. सॉल्यूशन में भी लिखा है try it yourself. Read the question carefully. Probably you are missing something in the question. Reading comprehension is very important even in quant. Read the question carefully. Maybe your crucial data you are missing. So read that carefully and then go and talk to the faculty member. Okay, thank you, sir. I need to get them right, then put in a time limit. Get them right. Aisha, you should write NMAT mock, lot of NMAT map. So if your NMAT is before CAT, you have to write 4, 5, 6 NMAT mock. Akansha, improve your score. I'm not getting into percentile detail today. I don't know how many people will write CAT paper exact. Obviously, it will improve because now very less number of students are writing MCAT. Your percentile will improve. But you have to target a score at least 70. So that is the number you chase, Akanksha. 70 plus, and you can do it. You still have time. Instead of thinking percentile. Percentile not in your hand. Sir, ratio proportion and percentages question are also correlated in DI, right? Yes, yes. Without that, you can't clear any of the exams. You have to get it correct. टाइम एंड डिस्टेंस नहीं होगा, टाइम एंड वर्क नहीं होगा, कोई एग्जाम भी नहीं होगा. एनमैट सम में तो सारे अरिथमेटिक आएंगे. एवरेज मिक्सचर कहां से होगा? These are very basic tools. Part B of the booklet is what? Which booklet? 496. Part B of the booklet. Which booklet? Which section you are talking about? Enough time is there. 25 दिन में 25 into 40 you can do 1000 question. Time की कोई problem नहीं है. 25 days into 40 questions of quant, you can do 1000 question of quant. Can you believe this? 25 into 40 is 1000 question, Mr. 496, Mrs. 496. 25 into 40 is 1000 question. 1000 question is good enough. You have enough time. Time की कोई कमी नहीं है. 25 into 40 is 1000 or no? 496.
Do it 1000 question. पहले कर लेते हैं 1000 क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं what result will come. Anyone else? Any other question? You can unmute and ask. If you don't have any question, you leave and study. Only one MCAT per day if you can do, you are doing 80 set at least for next 20 days, which is good enough number. Nothing is sufficient or insufficient. It is good enough number to crack. 80 सेट करोगे, 80 सेट आएगा तो होना चाहिए पेपर में. 25 दिन करोगे तो 25 into 4 100 सेट. 100 कंसेप्ट नहीं है LRDI के, कहां से लाएगा? है ही नहीं. $70 plus, Pramina, for all of you, $70 plus. That should be the target. Let's try to achieve it. Hello, sir. Yes. Sir, if I mail times, like if I mail them, and if we have a online mentoring session, it can help me to understand my errors. So should I do that? You can do that, but if possible, if you're not very far away from a center, better you go to the center. Better. If you can't do it, then take it online. Yes, sir. For online session, I'm talking about. That's what I'm telling you. If you can possibly visit the center, then take a in-person session in the center. If you cannot visit, then take online one. It helps. Okay, sir. At least offline में तुम्हें सामने से समझ में आएगा ना, that you will be able to ask also question. Hmm. Teaching is the last thing which is going to be online. Believe me. ठीक है. I will always love if all of you are sitting in front of me, because you will be able to challenge my theorem, my concept. You will be able to contribute better. All of us learn together. That is how it is. I think so. I am taking an online session, but it is always better to have offline. Yes, sir. Because in this case, I just now feel so demotivated. Like I'm feeling that I can't even do anything You at can this do a lot of stage. things. You are not focusing on your strength. You are not focusing on English. You are not focusing on DLR. English you are good at. DLR anyone can be good at from 0 to 100 in 20 days. I mean it. You just have to take MCAT and logic. All of you are good at. All of you are good at. You just have to practice. You are lacking practice. So just think of it. If you are doing your English, you are getting 40 plus. You are getting 30 plus in your DILR. Your score is 70 plus, which is itself is 95, 96, 97 percentile in CAT last year's accordingly. 68 was the number for last year for 95 percentile. Now just think of it. You can do 3 questions of quant. You have IITs open. You are not thinking in this way. Let's say you are doing modest 3 questions correct. IITs are open for you. When you think in this way, your motivation for quant will be double. अगर IIT मिल सकता तो IIM क्यों नहीं? Got it, Rushika? कितना भी टाइम लगे सुजल, 4 सेट MCAT में है, 4 सेट करना है. टाइम है तेरे पास, 24 आवर्स है. 20 दिन नहीं सोएगा, नहीं चलेगा. नहीं सोएगा तो कुछ नहीं होएगा. मत सो, खाना मत खा. डू इट. टाइम ही टाइम है लाइफ में. मोबाइल फेंक दे सुजल, मोबाइल फेंक दे. टाइम ही टाइम है. 4 सेट करना है MCAT के. एक MCAT में 4-5 सेट जितना है सब करना है एक दिन में. नहीं होगा तो खाना नहीं खाने का.
So should we end the session or any other question you have still? All of you, good night then. किसी और का है तो बोल. In BRC, I got MCAT 4 correct, and in DI 2. Improve your VRC and DI very quickly. Improve your VRC score very quickly. It can be done. And DILR after 3-4 days, what I've asked you to do, if you do it, your score will improve. One will take time, one question per day, one question per 2 days. That is the way it will come. So take your VRC score as high as possible, and same with DILR. Keep on practicing. Pacho set solve kar. MCAT le pacho set solve kar. That is how it is. If you can do it for 20 days, your score will skyrocket. Quant will not skyrocket, but quant will be enough to get a good college. बीच में मॉक एनमैट मॉक स्नैप दे देना. मॉक एनमैट मॉक स्नैप. You can do it. You have enough time. I'm not giving any motivation. You can do it. You do it for yourself. Nmat and mock snap. You're welcome, Ravina. Who else having any question? Please ask. दीपशिका कुछ लिख रही थी, क्या हुआ? You're welcome, Shabad. Sir, if logarithm is not done right now, we can miss. So, did you say to skip it? कितना स्कोर हो रहा है तेरा अभी? It's means overall or in maths only? Maths, only maths. Maths sometimes it's around 10, 15, and sometimes in the single digit also. Forget logarithm. Arithmetic. Algebra other than logarithm. And functions? No function, low logarithm. Slide में क्या लिखा है? Okay. Slide में क्या लिखा है? Special equation. Yeah. APGP, series, quadratic, inequality, indices, sides. Okay, sir. Thank you. जब हो जाएगा, then logarithm. 25th नंबर को लगे तो मुझे नहीं पूछने का, करने का. समझा? Okay. Thank you. ज्यादा बेटर दीपशिका, कॉलेज सिलेक्शन में नहीं बैठा. इट इज ऑलवेज दैट ज्यादा बेटर है, क्योंकि ज्यादा कॉलेजेस है. जहाँ पे कॉलेजेस ज्यादा है वो बेटर एग्जाम है दीपशिका, एंड फॉर ऑल ऑफ यू. मुझे कॉलेज चाहिए, एग्जाम लिखना नहीं है, कॉलेज चाहिए. Can we end the session or still you have question?
Anyone else? Otherwise, good night. You're welcome, Rishika. Welcome, Dipshika. Anyone else? Any question? Good night, Sujal. Good night, all of you. I'm ending the session. Ending the session. Bye.